Mr. Dnyanesh Walwadkar, sir. So, what to say about him? One of the amazing personalities we have with us today, and many of you were introduced about him while getting connected with this Wisdom Mic course. So, Mr. Dnyanesh Walwadkar is a computer vision scientist at Veridium, Oxford, MS Queen's Mary University of London. So, he has done his BE Information Technology from Pune University, that is from our SPP University. He has done MS as a big data scientist, Queen Mary, as I said, Queen Mary University of London. There are professional experiences that he has, like president of DIPEX Pune from 2019 19 to 20, executive member of the same, machine learning engineer, and then data scientist. These are all the experience that he carries further, like deep learning research collaborator. Then there is computer vision scientist at Veridium Oxford from September 2022 till present. He's been there. Also, these are like his latest research publication with 3 co-authors. You can see on the screen. So this is a certification about the same. So I hope everyone is clear. Today we are going to start with the very first STW, that is software training workshop. So let's begin with the session, and let's uh, text on the chat box and welcome, sir. So over to you, sir. Yes, so just I'm sharing my screen. Okay, so thank you for your energetic and kind introduction, Athar. So I guess everyone is up for today's session. I know many of you are very excited for these Python sessions. So as this might be your first programming session from live. So as I got to know that you all are from first year of engineering from different senior grade colleges. So I welcome you all for today's session. So on the most trending programming language of the world, Python. So Athar, please let me know, can participant unmute themselves, or they just have Uh, to participate in discussion using chat box? yes, sir. Okay, it's okay. So, so let's begin. So as I welcome you all to this session, I would like to congratulate you for choosing Python over Saturday's evening parties or any outing with the friends. So I was supposed to ask you to read someone to read this code, but as I think no one will able to unmute themselves, so I will read this code and we will start today's session with this code. So this code says that education is our passport to the future. For tomorrow belongs to the people who prepare for it today. Uh, so your presence here confirms that you are thinking about achieving something good in life. So I'm asking everyone to give themselves a round of applause for what they have achieved. So in chat box, you can clap for yourself. So just I will open my chat box so I can see your round of applause for yourself. Okay. So the first step, oh, chat box. So anyone is clapping. Oh, very good. Jagdish, Akanksha, Omkar, Om Narendra, Aditi. Yes. Thank you for clapping. So the first step towards achieving a big milestone in life is choosing the right thing, right? So it's tremendous achievement to pass that first step. So choosing right thing is the first step of achieving any big milestone. So rather than start with the Python today, let's talk about how computer work uh, and why we need programming language basically. So the curriculum at the local universities here in the UK, basically in Oxford or in London. So they designed with the basic understanding of the computers before learning any programming language. So despite that, I know that in our universities, like Pune University or in different universities in Maharashtra, uh, we just install Python and start typing codes without understanding the theory behind it, right? So in today's lesson, in today's session, I won't go into the details, but we will have intro to everything. And I will give you some books, videos in upcoming sessions for diving deeper with the all different technologies and terminologies related to the Python.
Okay, so so once all your registration process, your groups and timings for sessions and everything get sorted out, we will share Google Classroom information with you all. So this platform will be used for the posting assignments, quiz, technical books, study material, anything, brainstorming data related to the artificial intelligence, machine learning, data science, or any new trending topics in research, which will help you to stay on the top of trends and ultimately prepare you for the industry, right? For the job. So in final year, you are going to face different interviews, different recruitment process. So from first year, you will be have some experience of dealing with all this process. So we have already created this classroom and we will let you know all about it soon. Okay. Yeah. So this is our first introductory session on Python, and I'm very thankful for Student Welfare Club for organizing this for every one of you. So before discussing anything, let's start with some general questions. So go to this link, use this link basically www.menti.com, or you can directly scan this barcode from your screen, and we will have some questions over there. I think just two questions to start with the session. So just we will have introduction. So I'm trying to understand you all by these answers. So please respond to this question mindfully. I will share my screen so all of you can see the responses of everyone. So please join this link www.menti.com and use this code 23609268. Okay, so I will give you just 2 minutes. So in 2 minutes, you can join. So, and then we can start this particular quiz. Okay. Please join as early as possible because I got so much of content to discuss with you today. And we just have 1 hour of time. Okay. So I'm checking how many of you have joined this quiz. Please join fast. Use that link. If you have any confusion with joining, post your query in chat box. I have my chat box open. Mohan is saying your voice is breaking. Is my voice is breaking for everyone? Let me know. Sir, it's okay. You're Yeah, audible. okay. Okay, perfect. Thank you. Mm, okay, so let me see how many of you have joined this. Okay, now everything is okay, sir. Thank you, Mohan. Okay, so you already started participating in quiz. So just I will reshare my screen with that particular screen. Okay, so the first question was, how many of you are beginner to the coding or programming? So, oh, okay. So we have total 220 participants joining this quiz. Okay. So in meeting, I think we have, yeah, it's perfect. I think everyone is joined. Okay, so it shows that more than 90% of students are at the beginner level, and just okay, where is that? And I think 17 students are at intermediate level and just one student is expert. Okay, perfect. तो बेसिकली आप सब फर्स्ट ईयर में हैं, तो मुझे यही एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा बिगनर्स होंगे। तो जस्ट मैं चेक करना चाहता था कि कोई इंटरमीडिएट लेवल पे है, कोई एक्सपर्ट है, तो हम उस हिसाब से कंटेंट डिजाइन कर सकते थे, राइट? स्टडी मटेरियल, नोट्स एंड एवरीथिंग। सो
more than 90% students are beginners, so जो मेरा content रहेगा वो उसी हिसाब से रहेगा. So don't be worried about anything. And you can now switch to the next question. What you know about Python? Okay, so 90% students are beginner, but still check if you know anything about Python. Perfect. We are getting responses. Nothing. No. Okay, perfect. It's a programming. Don't know anything yet. It's first time starting. Okay. Any idea about Python? Anything? पाइथन कहाँ पे यूज होता है, कौन सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है जो पाइथन यूज करती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनीथिंग? इट्स कोडिंग लैंग्वेज. परफेक्ट. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज. ओके. Descriptive language, software language. Oh, now we are getting so many responses, so it's difficult to read. Okay. First time use, almost used everywhere. Yes, Python is used everywhere. Don't know, easy computer. Okay. तो बेसिकली एक बेसिक आइडिया हम समझ सकते हैं कि आज जो क्राउड है, जो सारे स्टूडेंट्स है वो बिगिनर लेवल पे है, राइट. और शायद ओनली 70 स्टूडेंट्स को कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, and more than 220 students are at beginner level. Okay, so let's begin with next part. Thank you for participating in this quiz. Now we have clear idea. Okay. And my chat box is open, so anytime if you feel any difficulty in listening my voice or seeing my slides or anything, you can just post in chat box. Okay. So Hari Om is saying that Python is used for website creation. Python is used for website creation, front end and back end. Okay, perfect. Okay. So in today's session, so today we are going to go over some basic information about computer working, a little bit of course information, and then we are going to talk a little bit about what is computation basically. So we will discuss at very high level what computers do, and we write program means exactly what we are doing, right? So we have to understand that we are trying to learn about Python, और हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, लेकिन हम प्रोग्राम लिखते हैं, हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, मींस बेसिकली हम क्या करते हैं, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. So just to make sure we are all on the same page, so we will have discussion on these basic concepts, and then we are going to dive into the Python basics. Okay, so we are going to talk a little bit about mathematical operations, which we can perform with the computers using different programming languages to make computer work for us, right? And then we are going to talk about how computers work and what is the need of programming language basically, right? So basically in everyday we use computers for different purposes. So what is the use of the programming language to deal with the computers, right? And as we shared the Google Classroom information with you all, and we are going to share that particular classroom code soon. So all the notes, code, and all the slides which I'm going to use during the sessions will be up there before the session, not for today, but from the next session. So you can have access to all the material before the session. So, and it's also great if you could take notes about the code and the discussions just for the future references, right? So if you are new to programming, I think the keyword for you is just the practice, right? So just we saw that the more than 90% students are new to the programming. So it's like a math or reading science books, right? So the more you practice, the better you get at coding, right? So you are not going to absorb programming by just watching me writing programs or hearing talking about concepts.
because I already know how to program, right? So you guys need to practice. So whatever I type, you guys can type with me. And I think also one of the big thing is, if you are new to the programming, you are kind of afraid that you are going to break your computer. So पिछले कुछ सेशंस में जो मैंने पाइथन पे लिए थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि डर रहे थे. मैंने उनको पूछा कि आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो, राइट? आप साइमल्टेनियसली मेरे साथ कोड लिख के प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? तो उनका आंसर था कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं कुछ कोड लिखूंगा तो मेरे सिस्टम पे, मेरे मशीन पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, राइट? So just by running Python and typing in some commands, right, you will not break your machine. So please be sure about that. So don't be afraid to just type some stuff and see what it does. So, okay, so I'm getting requests that, sir, please talk in Hindi language. Oh, okay, Yatin. Okay, so we will try to have a combination of Hindi and English. Okay. Okay. So let's go to the next slide. So this is the agenda for the today's session, right? So in detail in next slides हम discuss करेंगे कि पूरे जो sessions है Python के, जो हम student welfare club के through हर week में conduct किए जाएंगे, तो उसमें हम कौन सा syllabus cover करेंगे और basically हमारा motive क्या है इसके बारे में, right? So means basically by attending all these sessions आप क्या achieve करेंगे और इसका क्या फायदा होगा, ये भी हम आगे के slides में discuss करेंगे. Okay. So move to the next slide. Okay, so the first thing which you will get is the knowledge of concepts, which is pretty much true of any class that we will take with the student welfare club, right? So this workshop will teach you something through lectures, in sessions like this. So attend these sessions regularly, do not miss a single lecture. Quizzes and assignments will test how much you know and how you are doing progress with all these sessions in Python, basically. So this is a class in programming. So the other thing we want you to get out of this is the programming skills. And the last thing, and I think this is what makes this class really great, is we teach you how to solve problems. So competitive programming practice, right? So इस सेशन में हम पाइथन सीखेंगे ही, लेकिन पाइथन के साथ हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में भी सीखेंगे, राइट? अभी आप सभी बिगिनर्स हो, लेकिन जब आप फाइनल ईयर्स में जाओगे या अब थर्ड ईयर में जाओगे, जब आपके इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज होंगे, जॉब प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज होंगे, तो इंटरव्यू राउंड्स में जो हमारे कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, राइट? सो हम बेसिकली उन्हें कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस. सो उन प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को भी टैकल करने के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन सब सेशंस में. सो जैसे ही हम कोई पाइथन का कंसेप्ट कवर करेंगे, कोई न्यू टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तुरंत असाइनमेंट्स में और क्विजेस में गूगल क्लासरूम में, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपके साथ शेयर किया था, वहां पे हम सारा मटेरियल अपलोड करेंगे. सो आप वो असाइनमेंट्स रेगुलरली सॉल्व कर सकते हो, आप क्विजेस रेगुलरली सॉल्व कर सकते हो, जिससे एक आपके खुद के लिए भी आपकी एक टेस्ट होगी कि आप कितना सीख पा रहे हो. आप हमें आपका आउटपुट दे सकते हो कि हमें कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, और क्विजेस एंड असाइनमेंट्स के रिजल्ट्स के थ्रू भी हमें ये सब चीजें समझ में आएंगी. ओके, सो एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साथ, सो यहाँ पे इस स्लाइड में नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. सो जो टॉप परफॉर्मेंस रहेंगे उनके लिए हमने कुछ प्राइजेस भी रखे हैं. तो प्राइजेस किन्हें मिलेंगे? तो जो टॉप स्टूडेंट्स, जो टॉप परफॉर्मेंस रहेंगे, उन्हें ये प्राइजेस दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ दीज पर्टिकुलर सेशंस, राइट? सो आफ्टर द एंड ऑफ 7 or 8 सेशंस. सो प्राइजेस के लिए बेसिकली आपको इन सारे सेशंस में रेगुलर रहना है, सारे क्विजेस अटेंड करनी है विथ गुड मार्क्स. और क्विजेस जस्ट अटेंड नहीं करने हैं, तो वो आपको जल्द से जल्द अटेंड करने हैं, राइट? सो यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है अटेंड क्विज बिफोर ऑफ 70% क्राउड, राइट? सो समझो कि हमारे पाइथन सेशंस में आज मोर देन 250 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको लगभग 50-60 स्टूडेंट्स के पहले ये सारा क्विज अटेंड करनी पड़ेंगी. स्कोर मोर एंड आस्क मोर. सो बेसिकली यूजिंग चैट बॉक्स यू कैन आस्क मोर क्वेश्चंस. गूगल क्लासरूम भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो. आप
क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आप पार्टिसिपेट करो, असाइनमेंट सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। और जैसे ही 2-2 सेशंस हमारे कंप्लीट होंगे, हमारे जो वॉलंटियर्स है स्टूडेंट वेलफेयर क्लब के, वो ये सारी चीजें मेजर करते रहेंगे और हम हर 2 सेशंस के बाद टॉप 5 परफॉर्मेंस को शॉर्टलिस्ट करेंगे। और अगर हम हर 2 सेशन में टॉप 5 परफॉर्मेंस को शॉर्टलिस्ट करते हैं प्राइज के लिए, तो आफ्टर 8 सेशंस और आफ्टर 6 सेशंस वी विल हैव 20 प्लस स्टूडेंट्स who will get these prizes, right? और prizes में क्या रहेगा? academic books related to the machine learning, data science, python, anything, right? So देखिए, अभी इसमें आपका भी बेनिफिट है, अटेंड ड्यूली सारे सेशंस आप अटेंड कीजिए, right? So I got some questions in chat box. So Rudraksh is asking, sir, will be develop projects also in this course? Yes, of course. So यहाँ पे 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स बिगिनर्स है, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि हम सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे, उसके बाद हम सारे असाइनमेंट्स कवर करेंगे, क्विजेस करेंगे, फिर हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस टैकल करेंगे। और जैसे ही आप सभी कॉन्फिडेंट फील करोगे पाइथन के साथ और आप बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे, हम प्रोग्राम जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स है वो स्टार्ट करेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल असाइन यू वन बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू टैकल, राइट? सो तो वो आपका फाइनल प्रोजेक्ट रहेगा। Okay, so Manish is asking which ID will be used. Okay, so ये सब हायर लेवल क्वेश्चन है मनीष, आईडी वगैरह यहाँ पे सब बिगिनर्स है, तो हम पहले आज सेशन थोड़ा इंट्रोडक्टरी रखते हैं, ओके? और उसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम सारी ये चीजें डिस्कस करेंगे, और जैसे ही आप गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो जाओगे, उसके बाद भी हम ये सारी चीजें वहां पे पोस्ट करेंगे, पाइथन इंस्टॉलेशन प्रोसेस, आईडी कौन सी हम यूज करेंगे, और ये सारी, ओके? सो श्रीनिवास इज आस्किंग, सर दिस विल दिस प्रोग्राम be independent from the one we are getting taught in colleges? I don't know what you are meaning by that, independent, but yes, मुझे अभी आपका कोर्स के बारे में थोड़ी आइडिया है कि आपको फर्स्ट ईयर में शायद FPL, you will have one subject name as FPL, right? Fundamental of Programming Languages something. So in that course you are going to learn about Python. So हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो concepts आप learn कर रहे हो, वो शायद वो बेसिक लेवल का इंट्रोडक्टरी रहेगा। हम यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्टरी से स्टार्ट करेंगे और हम डीप डाइव करेंगे, राइट? हम थोड़ा डीप जाएंगे, हम थोड़े और एडवांस प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप, और इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये सारे असाइनमेंट्स वगैरह करोगे, तो आपका जो FPL सब्जेक्ट है जिसमें शायद पाइथन है, तो उसमें भी आप अच्छे स्कोर करोगे, राइट? अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, सो करंट नेम फॉर दैट सब्जेक्ट इज PPS, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके कार्तिक, थैंक यू। सो या, सो मैं जब इंजीनियरिंग में था फर्स्ट ईयर में, तब इस सब्जेक्ट का नाम था FPL, बेसिकली फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नाउ नेम चेंज टू प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, परफेक्ट, थैंक यू कार्तिक। ओके, सो आपको ये समझ में आया? आपको क्विजेस अटेंड करनी है, रेगुलर असाइनमेंट्स करने हैं, लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं, और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछो, प्रैक्टिस करो, ओके? सो यस, तो किसी ने तो पूछा है चैट में, सराहा, so how many sessions will be the part of this course, right? So yeah, so I'm coming to that question. So what are the things we are going to learn in these classes? So I feel like the thing we are going to learn in these classes can be divided into the basically in the 3 different uh, parts. So in the first section, you will understand what Python is, how Python work, and what all rules we have to follow, and some general basic terminologies related to the Python, like variable creation, declaration, and performing some basic operations using data structures. So some basic operations like the data operations, mathematical operations, taking inputs from users and performing some actions based on the inputs. So addition to that, how do you represent knowledge with the different data structures, right? So here you can see in this second point, arrays, list, tuple, these are the part of the data structure. Okay, so that will be the most important section of coding skills. So learning about data structure and control flows, basically to make or to allow computers to take some decisions. So we will learn all these things in the first part of the this particular course. So I think I will need 2 sessions for covering all these topics, okay? And the second big part of this course is little bit more abstract, so and it deals with how do you write good code, right?
good style. So code that's readable. So when you write code, you want to write it such that you are in a big company, so other people will read it, other people will use it. So it has to be readable, understandable by others. So to that end, you need to write code that's well organized, modular, easy to understand. So and not only that, कि means बस किसी दूसरे को समझना है, but next year maybe you will take another course, right? And you will want to look back at some of the problems that you wrote in this class, right? Or let's suppose in final year you want to have some flashback on these all the concepts, so you might not be understand or re-understand so what you were doing at that time. So writing readable code and organizing code is also the big part of this course. So the function, class, and the object-oriented programming concept will be covered in the second part of this section. So for covering all this concept, I will need 2 more sessions. Okay. So second part में ये रहेगा, और basically so third part, so the last section will deal with the everything to solve good problems using just Python language or any other language, right? So we will start this course with the Python, we will end this course with the Python, but you will have freedom to solve these competitive programs with any programming language you are good in it, right? सो बेसिकली लास्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हम मूव ऑन करेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर, जहाँ पे हम जो फाइनल ईयर्स में या बड़ी कंपनीज के प्रिपरेशन के लिए जो हमें इंटरव्यूज प्रोसेस है या कोडिंग राउंड्स होते हैं, सो उस लेवल के हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो सम ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, ऐसी बड़ी कंपनीज जो उनके कोडिंग राउंड्स में क्वेश्चंस देते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली फॉर फर्स्ट सेक्शन आई विल नीड 2 सेशंस, फॉर द नेक्स्ट पार्ट आई विल नीड 2 more sessions. So total we had 4 sessions. So for the competitive programming I will take as many as possible as SWC allows. Okay. एंड द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो प्रिपरेशन है वो हमारा फर्स्ट 2 सेक्शन से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो लास्ट सेशंस रहेंगे 2-3, वो सेशंस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए डेडिकेटेड रहेंगे. Okay, so now I will have look into the chat box. So okay, so Anurag Kumar Thakur is asking, so PPS subject is there in which we are learning Python language? Okay, yes, perfect. So Rohit is asking, sir, is there any need any laptop? Yes, if you have laptop then it's good. If you don't have a laptop, then also we have solution for that. So in the next sessions we will discuss about this. Okay, so Nisha, what's the winning prize? That's the surprise, right? But I mentioned that prize will be related to the academic thing, right? So you will get some good books, like books related to the machine learning, data science, artificial intelligence, or anything. So by learning Python you can have a good read on those books, right? So basically Python सीखने के बाद हम वो सारी टेक्नोलॉजीज भी सीख सकते हैं. So Python का ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो भी प्राइज आपको दिया जाएगा वो सारा आपके नेक्स्ट स्टडी से रिलेटेड रहेगा. Okay, so Anurag is asking, I don't have laptop now. Is it absolutely necessary now? No, Anurag. So if you don't have laptop, it's okay. No worry at all. I will give you some list of different applications, Android applications, iOS applications on mobile, which you can use for writing programs and testing your programming skills, right? Okay. लेकिन अगर लैपटॉप है तो अच्छा है, अगर आप फ्रेंड के साथ लैपटॉप शेयर कर सकते हो प्रोग्रामिंग स्किल्स की टेस्टिंग के लिए या असाइनमेंट्स के लिए, इट्स वेल एंड गुड. लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो कोर्स है वो बिगिनर से स्टार्ट होगा और एडवांस तक जाएगा, तो इसके लिए डिफरेंट मल्टीपल सॉल्यूशंस मेरे पास हैं, क्योंकि 5 सेशंस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप नहीं था. तो अभी उसको टैकल करने के लिए मैंने थोड़े डिफरेंट एप्लीकेशंस फाइंड आउट किए हैं. Okay, so Rushika is asking, will we have the grand test of government in the end for the certificate? What is meaning of that, Rushika? But okay, so you want to say that कि कोई grand test रहेगी certification को eligible रहने के लिए, right? So शायद certification के लिए कुछ different criterias है. SWC members will share that particular thing with you all. But yes, grand test भी रहेगी, right?
Will we get the recording of the session? uh, I don't have idea, but I think yes. Where to give attendance? I don't have idea. So anyone from our volunteer can answer that question. Akshay Kate is asking for any questions. Okay, perfect. Akshay, thank you for sharing that link. So Anurag is asking, SW's lectures are only on Saturday and Sunday. I think yes. So SWC's lectures are going to be only on Saturday and Sunday. Okay. Okay, so now we will stop for these questions and I will now move to the next slide. Okay, because I have, I think 22 more slides and we have to cover everything. Okay, so now let's start by talking at high level. What does computer do? Okay, so anyone wants to answer to this question? So just post your answer in the chat box. So what do you think about computer? How computer works basically, right? तो हमें पता है कि हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, हमें माई कंप्यूटर दिखता है, गूगल क्रोम दिखता है, हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, राइट? Anyone wants to answer that question? You have 15 more seconds. I am looking at a chat box. Okay, so computer takes our input, gives output. That is the answer from Swapnil. Thank you, Swapnil. It's okay. Anything more specific? So Aditya is saying computers only understand 0 or 1. Yeah, perfect. So that is the binary language. Using machine language, Rudraksh is saying perfect answer. Thank you for that. Jayesh is saying it understands the binary language. Okay, perfect. Sarah saying performs the calculation and task to reduce human labor. Perfect. Okay, so you will have some idea, right? So fundamentally, it does two things. Okay, so one performs the calculation and it performs a lot of calculations, right? So computers these days are really, really fast. Billions of calculations per second is probably not far off, right? So it performs these calculations and it has to store them somewhere, right? So we are doing some calculations, but we have to store those results somewhere. So we store that in the computer memory. So computer also has to remember results, right? And these days it's not uncommon to find the computers with the hundreds of gigabytes of storage, right? So currently my laptop has 1 TB, so means 1000 GB storage. So like that. So the kinds of calculations that computers do, these are two kinds again. So one are calculations that are built in into the language basically. So these are the very low level types of calculations like addition, subtraction, multiplication, and so on. And once you have a language that has these primitive calculation types like addition, subtraction, multiplication, or anything, you as a programmer can put these types together and then define your own calculations, right? So you can create new types of calculations and the computer will be able to perform those as well, right? Sorry. So I think one thing I want to stress here, and we are going to come back to this again during this entire lecture actually, is computer only know what you tell them, right? So computers only do what you tell them to do, and they are not magical. So they don't have mind basically. So they just know how to perform calculations really, really quickly. But you have to tell them what calculations to do, right? And computers don't know anything all right? So हम ये सब चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जब हम पाइथन लैंग्वेज सीखते हैं तो बेसिकली जो सारे कोर्सेस होते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि सीधा कोर्स स्टार्ट होता है फ्रॉम इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन. हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, हम आईडी कौन सी यूज करने वाले, वो क्वेश्चन भी किसी ने तो चैट बॉक्स में पूछा था. हम आईडी इंस्टॉल करते हैं, हम पाइथन सेटअप करते हैं एंड डायरेक्टली हम पाइथन के सिंटैक्स टाइप करना स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं. लेकिन हमें ये भी समझना है कि पाइथन लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, राइट? अभी जब मैं आपके साथ ये सेशन में डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मैं हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ. किसी को इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम है तो उन्होंने चैट बॉक्स में कहा कि आप हिंदी यूज कीजिए, राइट? तो दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो हम कम्युनिकेशन करते हैं. लेकिन जब हम पाइथन लैंग्वेज लिखते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट? किसी ने तो जो फर्स्ट क्वेश्चंस थे उसमें डाला था कि पाइथन इज द हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम सिंटैक्स लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट. अगर अभी आपका जो पीपीएल सब्जेक्ट है, अगर उसकी टीचिंग स्टार्ट हुई है तो आपको कुछ बेसिक सिंटैक्स भी अभी पता होंगे, राइट?
print statement and input statement, basically कुछ basic syntax related to Python. But वो जो सिंटैक्स हम लिखते हैं वो सिंटैक्स अल्टीमेटली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शंस कैसे करते हैं, राइट? वो हमें समझना है, राइट? तो उसी के बारे में हम थोड़ा आज समझने की कोशिश करेंगे. तो आज का ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो हम पूरा सेटअप करेंगे, राइट? सेटअप पाइथन का नहीं, बट सेटअप कंसेप्शंस का, राइट? सो हमने देखा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. ओके, so for the understanding computer and the programming languages, basically, so programming language and the computer's interaction, like I mentioned earlier. So let's discuss about the different types of knowledge and the statements, right? So the first type of knowledge is the declarative knowledge, and those are things like statements or statements of facts, basically. So in the slides you can see there is one statement: someone will win a prize before session ends, right? So let's suppose a statement of fact for today's lecture is someone will win a prize before class ends. Okay, so pretend I am machine. Okay, so you all are human and I am machine. Okay, so I don't know anything except what you tell me, and I don't know how to calculate the winner or the student from this particular session. Okay, but how is someone going to win a prize before class ends? That's the major question, right? So that's where imperative knowledge comes in, right? So imperative knowledge is the recipe or the how to or the sequence of steps which you people will tell me to follow to decide who is the winner of this session, right? So the sequence of steps is the imperative knowledge, and if I am machine, you need to tell me how someone will win a prize. If I follow these steps, then technically I should reach to the conclusion, right? So programming language क्या है? Basically imperative knowledge जो हम use करते हैं कोई जो हमारे different functions हमें परफॉर्म करने हैं कंप्यूटर के साथ, उसके लिए हम imperative knowledge के थ्रू एक रेसिपी डिसाइड करते हैं, जो रेसिपी हम कंप्यूटर्स में फीड करते हैं, और कंप्यूटर एज इट इज जो उसकी डिफरेंट कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज है उसके साथ कंप्यूटेशन करके हमें कुछ आउटपुट देता है, राइट? तो कंप्यूटर इंटेलिजेंट है, कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है बेसिकली, राइट? कंप्यूटर जस्ट फॉलो व्हाट यू टेल देम टू फॉलो, राइट? So we got some questions. Is recording of the sessions available? Okay, we have answered that, right? So you understand that. So there are two types of knowledge. Make sure of that. Please make note of that: declarative knowledge and imperative knowledge. So declarative knowledge means just the some statement or fact, but the imperative knowledge means the recipe or how to do that, right? So the next slide we are going to discuss about this more. Okay, so next slide. Okay, so let's discuss about this numerical example. So that shows the difference between the declarative and imperative knowledge. Okay, so an example of the declarative knowledge is the square root of a number x is y such that y times y is equal to x. Okay, so this will be the declarative statements. तो हम बेसिकली समझना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, राइट? और ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम सिंटैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं, राइट, मीन समझो कि अभी हम पूरा पाइथन सीख लेंगे विदाउट डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट, जो कि कंप्यूटेशन का या प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज है. अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करोगे, रेफरेंस बुक जो कि मैंने मास्टर्स में फॉलो किए या जो मैं अभी मेरे जॉब प्रोफाइल में यूज करता हूँ, वो उन सभी रेफरेंस बुक का डिस्कशन स्टार्ट होता है यहाँ से, राइट? तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में कि हमने एक स्टेटमेंट दिया जो कि था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x is y such that y into y is equal to x. Okay, so recipe for deducing square root of number x, now we have to feed that into the system. Okay, and they don't know what to do with that statement basically, right? So computer don't know how to deal with that particular statement. So but computers do know how to follow the recipe, right? So here is well known an algorithm. So recipe is the name for algorithm
right? So I'm just mentioning recipe to have the clear understanding for you, you all guys. So to find the square root of number x, let's say x is originally 16, as I mentioned in this slide. So if the computer follows this algorithm, it's going to start with the guess g. Okay, and let's suppose our first guess is 3. Okay, so we are trying to find the square root of 16, and we are going to calculate g times g. Okay, so what will be the g times g? So currently our first guess is 3, so g multiplied by g is 9, right? Okay, and we are going to ask, is g times g is close enough to x? So is 9 value close enough to 16, right? No, and I'm not really happy with 9 being really close to 16, right? So because it have the difference of 7. So I'm going to say, I'm not stopping here, I'm going to keep going. If it's not close enough, then I'm going to make a new guess by averaging g and x over g, and the new average is going to be my new guess, right? So you can see, so my current new guess is 4.17. Okay, everyone is with me? Okay, so and that what it says basically. So and then it last step is using the new guess, repeat the process. Then we go last step is using the new guess. Then we go back to the beginning and repeat the whole process over and over again. So and that's what the rest of the rows do here, right? And you keep doing this until you decide that you are close enough. So what we saw for the imperative knowledge in this numerical example was the recipe for how to find the square root of x. So what were the 3 parts of this recipe? तो अभी जो हमने ये रेसिपी डिसाइड की पर्टिकुलर दिस स्टेटमेंट को टैकल करने के लिए, तो हमने इस स्टेट में क्या किया, इसे सॉल्व करते समय क्या किया, कोई चैट बॉक्स में इसे रिकैप कर सकता है, आपने क्या ऑब्जर्व किया? जब हमने ये प्रोसेस की, हमने एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिया, हमने इंपेरेटिव नॉलेज का यूज लिया, हमने एक रेसिपी बनाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए, और हमने कुछ प्रोसेस की और हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया, लेकिन इस एग्जांपल के पीछे का पर्पस क्या है ये हम अभी समझने की कोशिश करेंगे, राइट? सो जो भी इंटरमीडिएट लेवल पे थे पाइथन में, जिन्होंने जो कोई तो आई थिंक मोर देन 20 स्टूडेंट्स ने आंसर किया था कि हम इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, क्या आप इस क्वेश्चन को प्रोग्रामिंग के लेवल पे ब्रेक डाउन करके क्या आप चैट बॉक्स में आंसर पुट कर सकते हैं कि अभी हमने क्या क्या किया एज अ प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव? तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम ये क्वेश्चंस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो हमने क्या स्टार्ट किया, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट किया। हमने कहा कि हमारा एक गेस है जो कि 16 है, हमने उस गेस को कैलकुलेट किया, हमारा पूरा एल्गोरिदम फॉलो किया, फिर हमें समझ में आया कि हमारा जो आंसर है वो 16 जो हमारा एक्स है उसके नियर बाय नहीं है, राइट? तो हमने क्या किया, हमने डिक्लेरेशन किया, हमने कैलकुलेशन किया, हमने कंपैरिजन किया, कंपेयर करने के बाद हमने फाइंड आउट किया कि हमारा रिजल्ट क्लोज इनफ नहीं है, तो हमने न्यू गेस किया और न्यू गेस के साथ हमने प्रोसेस रिपीट की, राइट? तो बेसिकली जो फर्स्ट सेक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन में, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि फ्लो स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये जो सारे स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट्स हमें यूजफुल होते हैं ये डिसीजंस करने में, राइट? तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया just by following some basic mathematical algorithm, right? लेकिन हमें अगर ये प्रोग्रामिंग में, अगर हमें ये कंप्यूटर में फिट करना है, तो उसके लिए ये हमें सारे लॉजिकल पॉइंट्स लगेंगे, राइट? in the programming language or with the any technical tool we will which we will use for dealing with this question, correct? So ये क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया, वैसे ही प्रोग्रामिंग में सॉल्व करने के लिए वो सारे डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि पाइथन में इंक्लूड किए गए हैं, राइट? तो बेसिकली मुझे ये बताना था इससे। सो हमने क्या क्या देखा इसमें बेसिकली? सो फर्स्ट वन वाज द सीक्वेंस ऑफ सम स्टेप्स, राइट? सो हमने कुछ देखा कि कुछ सीक्वेंसेस स्टेप्स की, सो द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो, एंड द अदर वाज अ फ्लो ऑफ कंट्रोल. So these were parts where we made decisions. Are we close enough to the 16 or not? And there were parts where we repeated some steps. So at the end, we said the repeat step 1, 2, and 3.
and that's the flow of control, right? So, and the last part of the recipe was to way to stop. So you don't want to program that keeps going and going, right? So you want to stop at some place. So, or for the recipe, you don't want to keep baking bread forever, right? So you want to stop at some point, like 10 breads is enough, right? So you have to a way of stopping basically, right? So you need a one way in the programming which allow you to stop at some place. So in the previous example, the way of stopping was that we decide we were close enough to the 16, and the close enough was maybe being within the range of 0.01 or 0.001, right? So as you can see in this slide, previous slide, so value uh, at our last in our last row was 4.00002, एंड हमने डिसाइड किया कि हम 16 के क्लोज इनफ है, तो हमने हमारा जो लूप था वो हमने स्टॉप कर दिया, सही है। तो ये वैल्यू हमने डिसाइड की। ओके, सो बेसिकली ये डिस्कशन था रिलेटेड टू द डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स एंड इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स। तो हम हमें just 1 minute, I am having some problem here with the okay, so now let's understand what all different types of machines which we have, right? ये डिस्कशन क्यों करना है, तो इससे हमें समझ में आता है कि मशीन्स कैसे इवॉल्व हुई, राइट? और कंप्यूटर्स के साथ जैसे ही इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के साथ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे इमर्ज हुई, राइट? तो हमें पता है आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता है बेसिकली, राइट? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है, भले ही आपको उसका कंसेप्चुअल नॉलेज ना हो, लेकिन आपने उसका नाम सुना है। जैसे कि हमने अभी पाइथन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, पाइथन के जैसे ही और कौन सी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है? जावा, सी प्लस प्लस, रूबी, स्वप्निल नवलेज सेइंग रूबी, सी प्लस प्लस, परफेक्ट। सो तेजस्विनी इज सेइंग सी प्लस प्लस, थैंक यू। यस, रुद्राक्षी HTML, CSS, JS, C++, JavaScript, Java, right? So all these different languages. So ये सारी different languages का use क्या है basically? कभी हमने सोचा है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं basically एक programming language ठीक है, right? कंप्यूटर के साथ डिस्कस करने के लिए what do you think? जैसे कि सेशन में ही अगर जैसे मैं सेशन ले रहा हूँ, मुझे 2 लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ रही है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो जब हम कंप्यूटर के साथ कोई इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो इतनी सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस क्यों है बेसिकली, राइट? तो उसके लिए हम ये स्लाइड देखेंगे। सो बेसिकली ओरिजिनली देयर वाज these things called the fixed program. So this one is known as the fixed program initially, and I am old enough to have used something like this. I don't know you guys use this type of calculator or not nowadays, because in mobile we have everything. So and where they're just the numbers, plus, minus, multiplication, divide, and equal operations which this calculator can perform, right? So but way back then, an example of the fixed program computer is this calculator, right? And from this calculator we are now evolving to the latest computers, latest systems which using very advanced languages, and which are using very strong memories, strong RAMs, strong processing units, right? So why there was a need of developing latest types of computer from these particular types of basic fixed program computers, right? So if you want to plot something, you can't, right, with these machines. So if you want to go on the internet, send email with it, or you cannot do that, right? So you cannot attend any meeting or any sessions using these particular types of calculators. So it can only do this one thing, right? Calculation. And if you wanted to create a machine that did another thing, then you have to create another fixed program computer that did completely the separate test, right? So that's not very great. So for all different purposes, we have to create different types of machines. So that's not very good. So that's when stored program computers came into play. So, and these were the machines that could store a sequence of instructions, and these machines could execute the sequence of instructions, and you could change the sequence of instructions and execute this different sequence of instructions to allow computer to perform the task which where you want to perform, right?
So that's what the basically basic need of any human being to come up with these types of computer, right? So you could do different tasks in the same machine, and that's the computer as we know nowadays, right? So the central processing unit, CPU, basically we call it as CPU in general terms, is where all these decisions get made. I will come to the chat box after discussing this slide. So we will have discussion on some questions. Okay, so please hold on. So the central processing unit, where all the decisions get made at the heart of every computer, and there is just the basic architecture, and it contains, I guess, just these four logical main parts. So the first is the memory, the input and the output is the other one. So you can see in this picture, and the ALU, basically arithmetic logic unit, is where all of the operations are done. Okay, and the operations that the ALU can do are really primitive operations such as the addition, subtraction, multiplication, division, like that, so on. So, and what the memory contains is a bunch of data and your sequence of instructions interacting with the arithmetic logical unit, is the control unit basically. So यहाँ पे जो भी information technology और computer science के students रहेंगे, शायद second year में आपको एक subject रहेगा, I forget the name of that subject. So in that subject, we're going to deal with all this internal architecture of computer. Okay, so it's better you have clear understanding of that, particularly from now onwards, right? So, and the control unit contains the one program counter. Okay, you can see here, this is the program counter used in the control unit. And when you load a sequence of instructions, basically the program counters start at the first sequence. So let's suppose we have 4 different sequence of instructions to follow. So this control unit set this program counter to the first instruction. So it starts at that sequence and at the first instruction. So it gets what the instruction is, and it sends it to the ALU, right? So now our instruction is passed on to the arithmetical logical unit from the memory, and the ALU asks, what are we doing operations on here, right? So what's happening? And it might get some data from the memory and some instructions. So it might do some operations there, and it might store data back into the memory, right? So results of that particular calculations. And just 1 minute, I'm having one long message in chat box. Okay. So so it might get some data, and if you're adding two numbers, let's suppose, so it might get two numbers from memory. So it might do some operations and it might store the data back into the memory, right? So after it's done, ALU is going to go back and the program counter is going to increase by 1. So initially program counter was set to the first instruction, and now we have increased our counter to the next instruction, right? Okay. So, and it just go linearly instruction by instruction, and that does some sort of test, and it's going to say, is this particular value greater or equal to or at the same as this other particular value? So that this test. So हमने जो देखा कि हम जब square root of x calculate कर रहे थे, हमने sequence follow की, हम first instruction पे थे, हम second instruction पे थे, हम third instruction पे थे, और हमने जब third instruction execute हुआ, हमने कुछ value calculate की हमारे गेस के थ्रू, और हमने चेक किया कि हमारा जो गेस है और जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो सेम है क्या, राइट? तो हमने वो कुछ टेस्ट की वहां पे, एंड basically the test is going to return the true or false. अगर वैल्यू क्लोज इनफ है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर वो वैल्यू हमारी क्लोज नहीं है तो हम कहेंगे नहीं, हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो ये नहीं है, राइट? And you are not just linearly stepping through all the instructions basically, so there are might some control flow involved, and where you might skip an instruction or start from the beginning and so on. So, and after you have done, when you finished executing the last instruction, then you might output something. So this really basic way that computer works. So why we are discussing all these things, you will have clear idea again in next slide. Okay, so just to recap, you have the stored program computer now, okay, that contains the sequence of instructions. The primitive operations that it can be done are addition, subtraction, logic operation, test, and which are something equal to something else, something less than, and so on. And moving
data or storing data and the moving data around and things like that. We are performing all those operations with these computers, and the interpreter goes through every instruction and decide whether you are going to go to the next instruction, skip instructions, or repeat instructions, and so on, right? So what is the meaning of interpreter? We are going to discuss about that. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ये 3 स्लाइड्स के कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, बेसिक आर्किटेक्चर, इसी में अगर किसी को क्वेश्चंस है तो आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में. आई एम ओपनिंग माय चैट बॉक्स. ओके, तो मेरा चैट बॉक्स ओपन है. जस्ट मैं एक बार रिकैप करता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक. तो हमने स्टार्ट किया व्हाट कंप्यूटर डूज, फिर हमने डिस्कस किया कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज है, राइट, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब हम बिल्ड करते हैं उसमें कैसे यूजफुल है, उसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखा. फिर न्यूमेरिकल एग्जांपल को हमने ब्रेक डाउन किया, हमने अंडरस्टैंड किया कि न्यूमेरिकल एग्जांपल कंप्यूटर्स की पॉइंट ऑफ व्यू हमें कैसे परफॉर्म करना है. उसके बाद हमने देखा कि ठीक है, अभी कंप्यूटर परफॉर्म कैसे कर रहा है, उसके लिए कौन सा नॉलेज चाहिए, वो तो हमें समझ में आया, लेकिन कंप्यूटर वर्क कैसे करता है और कंप्यूटर कहाँ से इवॉल्व हुआ. तो हमने देखा कि फिक्स्ड कंप्यूटर्स कैसे थे जिसमें मेमोरी नहीं थी, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे जो फिक्स्ड कंप्यूटर्स फॉलो करते थे, लेकिन अगर हमें कुछ एडिशनल स्टेटमेंट्स कंप्यूटर को पूछने हैं, फॉलो करने हैं, तो उसके लिए फिर हमने देखा कि कुछ और एलिमेंट्स हमने ऐड किए हमारे कंप्यूटर्स के साथ, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, राइट. एंड फ्रॉम दैट computer works, and that's where it deals with the any programming language, right? So पाइथन कैसे डील करती है, इसका जो बेसिक है उसको समझने के लिए हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, राइट. उसके बाद हमने देखा जस्ट ये रिकैप कि कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स अपने डिस्कस किया बेसिकली, राइट. Sir, is Python enough? So Mohan is asking, sir, Python is enough for cracking big MNCs like Google or Microsoft, or we need Java, C++? So मोहन, ये जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा होल्ड ऑन कर सकते हैं. जैसे ही हम ये सारे स्लाइड्स हमारी डिस्कस कर के खत्म हो जाएंगी, हम जनरल डिस्कशन ओपन करेंगे और उसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. ओके, सो जस्ट हम इंट्रोडक्टरी जो स्लाइड्स है आज की उसे हम कंप्लीट करते हैं. सो जो भी आपको स्लाइड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हो. जो जनरल क्वेश्चंस है वो एट द एंड ऑफ सेशन वी विल डिस्कस, राइट, कि पाइथन की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमें पाइथन ही क्यों सीखना है, या कुछ भी आपको कुछ भी जनरल क्वेश्चंस पूछना हो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आप पूछ सकते हो. ठीक है. सो एनी मोर क्वेश्चंस? So how is data saved in memory? What kind of system is used? Swapnil is asking. So okay, so memory storing के लिए वहाँ पे different kinds of technologies होती है, right? वहाँ पे भी different partitions होते हैं. Like हमें पता है कि RAM हम यूज करते हैं, हमारा हार्ड डिस्क हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी मेमोरी के बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसमें मेमोरी परफॉर्म एट वेरी डिफरेंट लेवल, उसका डिफरेंट फंक्शनिंग होता है. हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इसके बारे में आपको कोई ब्लॉग या कोई इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम पे. आर यू गोइंग टू हेल्प इन क्रैकिंग एग्जाम्स लाइक हैकेथॉन? परफेक्ट वैष्णव, यस. सो ये सारे सेशंस जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे, हमारे जो क्विज रहेंगे, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारे हैकेथॉन्स के कंपेरेटिव सिमिलर ही रहेंगे, राइट. लेकिन हमारी क्राउड जो है आज जो सेशन में है उसमें मोर देन 90% स्टूडेंट्स बिगिनर्स है. तो हम बिगिनिंग लेवल के नॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे पाइथन सेशन जो है वो बिगिनर टू एडवांस लेवल के लिए है. तो एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया और मोर 70% स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो गए पाइथन में, हम ये सारे क्वेश्चंस. ओके, तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा टाइम कितना हुआ है. जयेश पूछ रहा है सर सेशन कितने देर तक चलेगा? 12:30. So we will have discussion on your questions. Okay. So there is one interesting fact in the slide I'm sharing with you guys. Please be attentive and you can make note of this. So Alan Turing, right? So you may be aware about that personality. So Alan Turing, who was a really great computer scientist, he showed that you can compute anything using the 6 primitives, right? So we had discussion about the primitive steps, right? So, and the 6 primitives which he mentioned, those are move left, move right, read, write, scan, and do nothing, right?
So these are 6 primitives, like we were discussing about the addition, subtraction, multiplication, division. So computer don't understand addition, right? कंप्यूटर को सीधा ये समझ में नहीं आएगा कि हमें एडिशन करना है, एडिशन तो हायर लेवल लैंग्वेज है, लेकिन कंप्यूटर किस 6 डिफरेंट प्रिमिटिव्स में समझ पाता है लैंग्वेज? सो मूव लेफ्ट, मूव राइट, रीड, write, scan, and do nothing. So using those 6 instructions and the piece of tab basically, so he showed that you can compute anything just using these 6 different instructions, primitive instructions. Okay, and using those 6 instructions, programming languages came about that created a more convenient set of primitives. So you don't have to programming only these 6 commands. Now you have very different programming languages, different functions which you can use for programming. So, and one interesting thing he mentioned, or the really important thing that came about from the 6 primitive, is that if you can compute something in Python, let's say, if you write a program that computes something in Python, then in theory, you can write a program that computes the exact same thing in any other language. So now, so there is no limitation on doing that, right? And and that's a really powerful statement. So think about that today. So if you write anything in Python, then you can convert that same piece of code in any other language, right? Without any restrictions, and all different things are just working on the 6 primitives, right? ओके सो जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो प्रोग्रामिंग के लिए अभी शायद टाइम कम है, राइट? ओके, सो हम अभी जस्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ सिंटैक्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी वर्ड्स होते हैं, उनको हम नंबर, स्ट्रिंग्स, सिंपल ऑपरेटर्स इनके नाम से जानते हैं। तो जैसे इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैट, डॉग, बॉय, ये सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है इंग्लिश में, राइट? वर्ड्स है लेकिन ये सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है। सिंटैक्टिकली करेक्ट क्या है? कैट हग्स बॉय, राइट? सो वैसे ही प्रोग्रामिंग में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, हमें कुछ सिंटैक्टिकल रूल्स फॉलो करने होते हैं, और वो सारे सिंटैक्टिकल रूल्स हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो यस, सो किसी ने तो हमारा ये डिस्कशन हो चुका है कि कंप्यूटर्स कैसे वर्क करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। सो बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करते हैं मीन्स क्या करते हैं, जस्ट इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि लेट्स सपोज वी वांट टू टाइप कैपिटल डी ऑन द स्क्रीन, सो वी कैन प्रेस द शिफ्ट एंड डी बटन, राइट? तो हम शिफ्ट एंड डी जब प्रेस करते हैं तब क्या होता है, कुछ बाइनरी कोड जनरेट होता है। वो बाइनरी कोड जो होता है उसे हम आस्क की वैल्यू कहते हैं, जो कि पास ऑन होती है सीपीयू तक, सीपीयू के थ्रू मेमोरी में स्टोर होती है, मेमोरी से फिर से अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में उसे लोड किया जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट उसे ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। जस्ट एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन समझता है, राइट? लेकिन बाइनरी लैंग्वेज जो है वो 1 एंड 0 में है, तो 1 एंड 0 कंप्यूटर कैसे समझता है, इसके बारे में किसी को पता है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, राइट? कभी किसी ने सोचा है कि ठीक है, कंप्यूटर्स डील्स विद द बाइनरी लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज डील विद 0 एंड 1, बट 0 एंड 1 ये दो है चीजें, ये नंबर है, और ये नंबर कंप्यूटर कैसे समझ पाता है? किसी को आइडिया? यस, सो आई एम गेटिंग नो इलेक्ट्रिसिटी, परफेक्ट। तो बेसिकली जो कंप्यूटर्स में चिप्स होती है, वो चिप्स डिफरेंट वोल्टेज पे काम करती है, राइट? तो जैसे CMOS, आप इस चिप्स के बारे में देख सकते हो, जो कि बेसिक सीपीयू में यूज होती है। तो चिप्स में अगर लो वोल्टेज रहे, 0 to 1.5 वोल्ट का अगर वोल्टेज रहे, तो वो साइन होता है कि हम 0 कन्वे करना चाहते हैं कंप्यूटर को, और अगर वोल्टेज लेवल 3.5 एंड अबव अगर हो तो उसका मीनिंग होता है 1, राइट? ओके, so I think we are running out of time, and I'm getting message that sir can we take questions. So ओके, सो ये जो स्लाइड है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि पाइथन कंप्यूटर के साथ डिस्कस कैसे करता है, राइट? तो आज हमने देखा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर में पाइथन लैंग्वेजेस की नीड क्या है, बाइनरी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, और ऑल दिस डिफरेंट कंसेप्ट। लेकिन पाइथन कोड जो है वो बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे होता है, राइट? तो ये डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे यहाँ से, राइट? सो व्हाई पाइथन बेसिकली इज इजी टू लर्न,
मैच्योर सपोर्टिव पाइथन कम्युनिटी है हमारे पास, जो पाइथन के बारे में बहुत सारे solutions प्रोवाइड करती है, एंड ऑल दिस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यू माइट नो, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब पाइथन में हम कर सकते हैं, और पाइथन इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ऑल द big level programmers, right? Okay, so this was recap. So I'm done with my slides. We will cover all these remaining 2-3 slides in the next session. So now we can have question and answer session. So we are currently running out of time. Sorry for that, because I had so much to share with you guys. So I will stop my screen, and Athar can share his screen with that particular question answer portal. And if any one of you have any questions, now you can post that in chat box. So, sir, we have few questions over here. Okay, Is my screen visible? perfect. Okay, sir. So, basically, few questions are repeated, but we will take the main questions. Okay, Is so what? downloading Okay, is okay, you can downloading read. Python? Yeah, is downloading Python or any other language necessary to code? Is downloading Python? तो आप इस क्वेश्चन में दीक्षा क्या कहना चाहती हो? मीन्स आप पाइथन डाउनलोड करना सिस्टम पे, अगर आपका ऐसा कहना है तो यस, जो भी लैंग्वेज हम यूज करेंगे उसके लिए हमें पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा, जावा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो बेसिकली पाइथन डाउनलोड करते हैं मीन्स हम क्या डाउनलोड करते हैं, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि हम डिफरेंट अर्थमेटिकल यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स, ये सब हमारे कंप्यूटर में होती है, राइट? तो वो बाइनरी कोड प्रोसेस करके कंप्यूटर में कुछ फंक्शंस करते हैं। तो हम जब कोई लैंग्वेज डाउनलोड करते हैं या उसकी सपोर्टिव जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करते हैं, वो जो एप्लीकेशंस होते हैं, हम जो सोर्स कोड लिखते हैं जो कि हायर लेवल लैंग्वेज में, राइट? सो जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये एक स्टेटमेंट है जो कि हायर लेवल लैंग्वेज में है, जो कि ह्यूमन रीडेबल है। लेकिन ह्यूमन रीडेबल टू मशीन रीडेबल कन्वर्ट करने के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के कुछ वर्चुअल मशीन्स होती है, जो कि सोर्स कोड टू बाइट कोड एंड बाइट कोड टू मशीन रीडेबल कोड कन्वर्जन करते हैं। तो ये सब फंक्शनिंग करने के लिए हमें लैंग्वेजेस की एप्लीकेशंस सिस्टम पर डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ओके, So, if we master in Python, then it is necessary to learn other programming languages like C++ and Java. यस, ये जो क्वेश्चन है हर सेशन में रिपीट होता है कि पाइथन सीखने के बाद सी प्लस प्लस एंड जावा सीखना चाहिए क्या? तो मैं बेसिकली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो मैं बेसिकली अभी कंप्यूटर विजन साइंटिस्ट की पोजीशन पे वर्क करता हूँ, जिसमें मैं पाइथन यूज करता हूँ और सी प्लस प्लस एंड जावा बोथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज करता हूँ। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज जो है वो मशीन लर्निंग और रिसर्च वर्क के लिए सही है। लेकिन जब हम एज कंप्यूटिंग पे आते हैं, एज कंप्यूटिंग इन द सेंस कि हमारे कुछ मोबाइल्स पे एप्लीकेशंस होते हैं, राइट? सो मोबाइल्स पे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो हमें बहुत फास्ट रन करने होते हैं। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है, एंड पाइथन जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो दोनों की फंक्शनिंग बहुत अलग है। हम पाइथन एज कंप्यूटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे हमें सी प्लस प्लस यूज करना पड़ेगा, राइट? सो जावा एंड सी प्लस प्लस इज मस्ट, बट अगर हम नहीं सीखते तो भी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि पाइथन के साथ सी प्लस प्लस एंड जावा का भी नॉलेज आपको अगर रहे तो इट्स हैव सो मच बेनिफिट्स, राइट? सो लर्निंग सी प्लस प्लस एंड जावा, गो विद दैट। So, together with this comes a question: ki, is Python enough for cracking big MNCs like Google and Microsoft, or Java and C++ are also, needed? Yes, Python is enough basically for cracking any interview rounds, any coding interviews. Python is enough, but basically Java जो language है और C++ जो language है वो और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है हम कह सकते हैं, और उसमें जो सारी फंक्शनैलिटीज है उसके रैपर क्लासेस हमें पाइथन में मिलते हैं डायरेक्टली। तो पाइथन में हमें बहुत कम लेंथ का कोड लिखना पड़ता है किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। सो पाइथन में सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जावा एंड सी प्लस प्लस का कुछ अलग ही बेनिफिट है, राइट? तो मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा कि सी एंड सी प्लस प्लस मत सीखिए या जावा मत सीखिए, लेकिन पाइथन इज इनफ फॉर क्रैकिंग एनी कोडिंग इंटरव्यूज, बट जावा एंड सी प्लस प्लस सीखना भी जरूरी है। Okay, so sir, one last question जो कि बहुत बार chats में भी पूछा जा रहा था कि please clarify about them about Google Classrooms. They were asking कि how do we join Google Classrooms?
यस, तो गूगल क्लासरूम क्या है? तो जस्ट मैं एक बार मेरी स्क्रीन में शेयर नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो हम Sure, you आपको can. गूगल ये last क्लासरूम का, question था. यस, This was सो the गूगल, last question, Bitu. You can ओके share your ओके ओके, screen. ओके, सो प्लीज allow me, just I'll check if it's open on my end. uh just one more minute. Okay, so I have, okay, so now I'll share my screen. So now you all can see the Google Classroom on my screen. So basically Google Classroom join करने के लिए है, जैसे ही आपके सारे ग्रुप्स एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन गोइंग है स्टूडेंट पेरिफेरल क्लब के साथ, वो जैसे ही सब आपका हो जाएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ कोड गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए। तो बेसिकली आपको करना क्या है, गूगल क्लासरूम पे जाना है, ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है, ये कोड हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, या हम आपके साथ एक बार कोड शेयर करेंगे और डायरेक्टली आप जब बार कोड स्कैन करोगे आप इस क्लास में एंटर कर जाओगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो डिफरेंट सेक्शंस है, अनाउंसमेंट सेक्शन, बुक सेक्शन, स्टडी नोट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग डेटा, क्विज एंड असाइनमेंट। तो यहाँ पे आपका स्टडी मटेरियल अपलोड होता रहेगा। तो मैंने एक बुक भी यहाँ पे अपलोड करके रखी है बेसिकली यस्टरडे। सो वी आर गोइंग टू फॉलो कंटेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, राइट? तो एंड यहाँ पे मुझे एक्सेस रहेगा देखने के लिए, यहाँ पे आपके ग्रेड्स रहेंगे, जो हम असाइनमेंट्स क्विज आपके लिए पोस्ट करेंगे, उसके ग्रेड्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे, और जिसके थ्रू हम प्राइजेस और ये सब चीज़ें एलोकेट करने वाले हैं। ओके, तो आपके साथ एक कोड और बार कोड शेयर किया जाएगा जिसके थ्रू आप इस गूगल क्लासरूम में एंटर कर सकते हो। लेकिन आई थिंक मुझे इंस्ट्रक्शंस थे कि अभी तक शायद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन गोइंग है, तो जैसे ये सारी चीजें आपकी फाइनल हो जाती है आपके साथ ये डिटेल्स शेयर की जाएंगी। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चंस? So students are requested to please stay there for further announcements. And we would like to thank Mr. Dnyanesh Walwadkar sir for associating with us today for this session. And soon we will be meeting again for next STW session that everyone will be, reported on their WhatsApp groups. So thank you, sir, for your valuable time. So Yes, please, thank you, once Arthur. again, everyone should, thank sir for this first session. And I hope everyone enjoyed this session. Yeah, and thanks everyone for joining this session and participating in this chat. Okay, so हर सेशन में यही एक्सपेक्टेड है आपसे। थैंक यू। Thank you, sir. So there are further announcements about feedback attendance. Okay. So let me share my screen. Please be there. Otherwise, आपका attendance, mark नहीं हो पाएगा. So please be there. I'm sharing my screen. Just a minute. Okay. So here are the announcements. Sharing. So first, again, I'm repeating this norms. Attendance for STW and PDW both session is very compulsory. Okay. Above 80% attendance is needed for both the sessions separately. There will be tests for each STW and PDW session that will be taken on the same day or the next day of the session. And at the end of the course, जैसे sir ने बताया, there is a grand test about both STW and PDW separately about both the sessions. So I hope everyone is clear with this 4 norms. Okay, attendance wala and about the test. Then there is this separate session will be there for this girls and boys, online and offline. And whatsoever the, soon we will be creating WhatsApp groups for Wisdom I registered students. So ये जो सेशन था ये इंट्रोडक्टरी सेशन था, राइट? बट दिस सेशन वाज कॉमन फॉर ऑल जिन्होंने रजिस्टर किया है नहीं किया उनके लिए। बट अभी कल से जो सेशन शुरू, कल से आई मीन नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, वो जितने भी सेशन शुरू हो गए वो सिर्फ रजिस्टर्ड बच्चों के लिए ही होंगे। सो इफ यू हैवंट रजिस्टर्ड, so this was an introductory session. So there were many people who haven't registered are here, but at the same time नेक्स्ट हम लोग ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, सेपरेट ग्रुप्स जिसपे सिर्फ रजिस्टर्ड बच्चे ही रहेंगे एंड दे विल बी ओनली प्रोवाइडेड विद द पासेस फॉर दिस कोर्सेज. सो इफ यू हैवंट रजिस्टर्ड, सो for any query, so I'm sharing this phone numbers. I request you all to please take screenshots. Okay, for any query please contact Mr. Sankesh Shinde for SCOE college.
Abhinandan Kawate for SKN College, Akshay Kate for NBN College, and Vivek Patil for SITS Narre College. So please everyone take screenshot of this, and these are all respective coordinators for your college. I hope everyone is clear with the screenshots. Further announcement is this about feedback come attendance form. So please, as soon as possible, this link is also provided on your chat box. So you can click there also and fill it. Otherwise, it is shown here https://bit.ly/stw1-feedback. So this is a attendance form come feedback form, right? So इसके basis पे आपकी attendance mark होगी. So please go fast and fill this form. We are giving you 5 to 4 minutes more to fill this feedback form. So this is very necessary for everyone to fill. Otherwise, पहले दिन के सेशन का attendance आपका absent mark हो जाएगा. So we don't want that, and even you don't want that. So please be fast.